NMC needs to learn one thing categorically. लोकतंत्र चल रहा है, इसको तानाशाही में नहीं बदलना है. The orders of medical negligence, if we see, are protecting the doctors, and there is no protection to the patients. Only statute or law in India wherein the nomenclature of punishment has not been defined. For the For doctor, example, exactly for the doctors, they says you can suspend the license for what duration? Even for 1 hour suspension is suspension, for 1 month is suspension, or you can revoke it, or you can give the warning. What is warning? You have done something which has caused the life of the person. किसी की जान चली गई है भाई, तुम्हारे एक रॉन्ग इंजेक्शन की वजह से, फॉर एग्जाम्पल, या रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से, और आप कह रहे हो कोई नहीं, हमने वार्निंग दे दीजिए, आगे से इंजेक्शन सही लगा देना. today we have with us Advocate Prashant Bakshish. Thank you for joining us, sir. थैंक यू. सर, आज हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो EMRB के रिलेटेड रहेगा. NMC का जो ऑटोनोमस बोर्ड है EMRB, उस बोर्ड के बारे में कुछ बता सकते हैं सर? EMRB का रोल क्या है NMC के अंदर? जी, सी EMRB बोर्ड जो ऑटोनोमस बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एज पर द न्यू मेडिकल लॉज, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, उसका मेन पर्पस है टू हैव द स्क्रूटनी एंड ड्रॉ द अकाउंटेबिलिटी for the treatment and the procedure administered by the medical professionals. So कोई भी प्रोसीजर या ट्रीटमेंट हो रहा है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी डॉक्टर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है या ट्रीटमेंट कर रहा है किसी पेशेंट के ऊपर, तो उसको वेदर दैट डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट करेक्टली और नॉट, वो चीजें एग्जामिन करने का ड्यूटी इन्वोक होता है टू EMRB. EMRB की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इट इज एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड. Means, firstly, the medical professional should be registered medical professionals. As per Indian laws, if you have the degree, let's say, and do not possess the license to practice, then you are not qualified to be called as a doctor at the face of it. And second, if you are qualified to be a doctor and you are prescribing any treatment or administrating any treatment, उस treatment के duration में और period के around, वो एक ethical treatment होना जरूरी है. तो इसलिए उसको एग्जामिन करने के लिए, टू गिव द मेन पर्पस, इफ आई सी द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इन द स्टैट्यूट, इज टू ब्रिंग द ease and assistance to the patient safety and to ensure that the patient safety rights are being considered at the top priority. सर, EMRB की बात करें तो जब स्टेट मेडिकल काउंसिल से जो पेशेंट्स हैं या उनकी फैमिलीज को जब जस्टिस नहीं मिलता तो वो NMC में अपील करते हैं, बट रेगुलरली हम देख रहे हैं कि सर अपील रिजेक्ट हो रही हैं. सर, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? करेक्ट. देयर इज अ इंटरेस्टिंग फैक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको स्टेट मेडिकल काउंसिल्स में अपनी कंप्लेंट फाइल करनी होती है. देयर विल बी द ऑर्डर विल कम. वो ऑर्डर से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, आई एम नॉट टेकिंग वेदर द कंप्लेंट विद पेशेंट साइड और द डॉक्टर साइड, ईदर ऑफ द साइड, तो आप उसको फर्स्ट अपील ले जा सकते हैं EMRB पे. EMRB has to decide. अगर again you're not satisfied, then it has to go to the NMC, National Medical Commission main board. That is the procedure nomenclature. But interestingly, just because of one twisted word in the entire statute, the National Medical Commission, I will use, snatched the rights of the patients and only working with the light as well as in the line to protect the doctors. So आज की डेट में अगर हम NMC की इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे चलें तो वो कहती हैं कि अगर EMRB के अंदर किसी ने अपील करी है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कर सकता है. अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम द विक्टिम, आई फाइल द कंप्लेंट टू द स्टेट मेडिकल काउंसिल and the state medical council dismiss the complaint. I have the grievance, state medical council dismissed it. And we can observe with the thousands of orders of the different state medical council who does not write in the quasi judicial order the grievances of the complainants or the victims, and in a very hasty manner decides and dismiss the complaints. तो उस कंप्लेन को मैं बीइंग अ विक्टिम मैं असील नहीं कर सकता, मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता. बट हाँ,
अगर मेरी कंप्लेंट पे ऑर्डर मेरे फेवर में होता है और डॉक्टर को नेग्लिजेंट डिक्लेयर किया जाता है, देन ही हैज अ राइट टू अपील दैट ऑर्डर बिफोर ईएमआरबी। ईएमआरबी ने भी अपहेल्ड कर दिया स्टेट मेडिकल काउंसिल का ऑर्डर, तो उसके पास फर्दर राइट है विद इन 60 days टू प्रेफर फर्दर अपील टू द नेशनल मेडिकल कमीशन। व्हाट इज द इक्वालिटी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनएमसी इज पुटिंग फोर्थ? सर रेगुलरली ये देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स के फेवर में रिजल्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसे नेक्सस सा बन चुका है एनएमसी का स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के साथ? सी, आई विल make a different statement here. I will say not with the NMC का nexus या state medical council के साथ बन गया या नहीं बन गया. I cannot comment. I have no authority to comment on that aspect. But yes, you have rightly pointed out the orders of medical negligence, if we see, are protecting the doctors, and there is no protection to the patients. Now the question arises, why, if someone has committed the wrong, why can't you make the accountability upon that person's head? That is the whole purpose of this board, to find out who is accountable for the wrongs. If you can't find out, being the expert as they claim, and I do not dispute, if you are the expert in the medical profession, then why can't you examine and bring the accountability? Interesting factor यहाँ पे एक और है, मैं आपको बताता हूँ. Only statute or law in India wherein the nomenclature of punishment is not been defined. फॉर द For डॉक्टर example, for punishment? exactly for the doctors, they says you can suspend the license for what duration? Even for 1 hour suspension is suspension, for 1 month is suspension, or you can revoke it, or you can give the warning. What is warning? You have you have done something which has caused the life of the person. किसी की जान चली गई है भाई, तुम्हारे एक रॉन्ग इंजेक्शन की वजह से, फॉर एग्जाम्पल, या रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से, और आप कह रहे हो कोई नहीं, हमने वार्निंग दे दीजिए, आगे से इंजेक्शन सही लगा देना. व्हाट इज दिस बिहेवियर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? एक चीज और मैं पॉइंट करूंगा कि जब अभी अगर वी चेक द वेबसाइट ऑफ ईएमआरबी, तो वहां पे राइट. मेंबर्स जो जितने भी 5 to 6 मेंबर्स होने चाहिए वो सारी पोजीशंस वेकेंट है। सर इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा I give you the reply what the central government will put forth. We are under the process of filling up the vacancies. Or the vacancies have been filled up. We did not updated the website. है? तो You have सर rightly pointed out the institution needs to put the accountability. There is a website. This website is not from their own pocket. This is from the taxpayers' money. Then you are accountable to bring the transparency to the taxpayers. What is taking place? What is not taking place? You cannot come and say कि भाई हमने किया था, हुआ नहीं. So, but technically speaking, as of now, as per my knowledge, as on date, EMRB board is there. Even I have received the order from the EMRB board in the month of August 2024. So certainly the board is there, but they are not updating the data on the site. That is certainly wrong. सर उनके जो कंट्रोवर्शियल गाइडलाइंस हैं दो, जैसे आपने राइटली पॉइंट किया कि एनएमसी एक्ट 2019 और एनएमसी एक्ट आरएमपी एक्ट 2023 में जो सेक्शन 30 है और रेगुलेशन 44 है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स को ही सारे प्रोविजन है। सर आप सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं जहाँ पे उन्होंने बैक ट्रैक किया Very interesting point here. पहली बात, सेक्शन 30 सबसेक्शन 3 कहीं ये नहीं कहता कि पेशेंट्स अपील प्रेफर नहीं कर सकते. वो ये कहता है कि सब सेक्शन 1 के बेसिस पे द डॉक्टर्स शुड बी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स टू प्रेफर द अपील. अगर इतना ही एक्सप्लिसिट है सब सेक्शन इन द सेक्शन 30 ऑफ द एनएमसी एक्ट, तो पार्लियामेंट लिखता, legislature made the statute with the intent to hold the equality. Where is the equality? Now what happened, they have in the month of, if I'm not mistaken, July अगस्त 23 अगस्त 2024। or August 23, they have issued one regulation. और रेगुलेशन That regulations, as per regulation 44, says only doctors can prefer the appeal.
not the patients. Interestingly, they themselves withdrew the regulation on 23rd of August 2023. And I read the verbatim of that regulation. I have the regulation with me as now. It says that for removal of doubts, it is clarified that Indian Medical Council Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2002 shall come into force with immediate effect. Interesting factor for the citizens to know is Indian Medical Council Act 1956 was the previous act, which has been changed to the National Medical Commission 2019 Act. इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंदर भी अपील का प्रोविजन नहीं था. अपील का प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ है 2002 में with the intervention of the Honorable Supreme Court, when the right to appeal has been given under 8.7 and 8.8 regulation of 2002. Thereafter, this new regulation of 2023 came, which has been withdrawn within 3 weeks, if I'm calculating correctly. And while withdrawing, they are saying that we are adopting the regulation 2002, which gives the right to appeal. There is no ambiguity. Yes, if you want to create the ambiguity, then you may create. But the question is, why do you want to create the ambiguity? What is troubling you to give the rights to the patient to have them heard? Why can't they prefer the appeal? भाई आप अगर इतने ही सही हैं, आपके डॉक्टर्स को सारा ट्रीटमेंट सही किया है, पेशेंट गलत है, तो भाई उसको अपील कर राइट. क्या डिफिकल्टी आ रही है आपको उसको अपील राइट देने में? सुप्रीम कोर्ट का केस की बात करें, 26 अगस्त आई थिंक 24 में वो जजमेंट आई थी. If I'm not 14th of August 24 was जब the उन्होंने बैक ट्रैक किया था कि नाउ एमसीआई I 2002 कोड किया, एमसीआई 2002 कोड विल बी I अप्लाइड नाउ. बट वो correct. सर उसके बाद भी वही रेगुलेशंस से रिजेक्ट हो रही है रिपील से, क्योंकि पेशेंट सामने आ रहे हैं, पुराने जो कंट्रोवर्शियल उनकी गाइडलाइंस हैं. That is the whole point. बट Leave सर वो what is supreme. Leave everything whatever they have stated in supreme. Let's leave that for a moment. बट वो भी एक तो Their अटेम्प्ट है gazette, सर. their gazette notification, their own gazette notification, number R-12013, categorically says that regulations of 2002 will be enforced. I understand you do not want to stand what the statement you have given before the Honorable Supreme Court. You may be having a disregard to the court of law. No worries. We lawyers are there to protect the integrity and dignity of the judicial institutions. But at least protect your own institutions guidelines, gazette notifications, which says that 2002 will be enforced. And the same statement was provided and given before the Honorable Supreme Court. Now, either they are under the mindset that we are the kings, now we will rule the state the way we wish to. NMC needs to learn one thing categorically. लोकतंत्र चल रहा है, इसको तानाशाही में नहीं बदलना है. और जो ये करने के पीछे इनकी मंशा चली आ रही है, वो पूर्णतः देश की संविधान को, देश की एक न्याय व्यवस्था को हिलाने वाली है. एक देश के नागरिक का संविधान पे, कानून पे जो विश्वास है, उसको झंझोड़ रही है. दिस इज द रियलिटी. ये सब चल रहा है, ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे जो मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे, कहीं ना कहीं महकमे का, एनएमसी का, नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसके डिपार्टमेंट्स का, के जो अफसर हैं और जो आला अधिकारी वहां बैठे हैं, उनका जो रवैया है एक सरकारी महकमे के बाबूगिरी वाला, उसको बदलने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, बहुत जरूरी है इस समय पे. आप एक कुर्सी पे बैठे हो, वो कुर्सी संवैधानिक कुर्सी है, उस पे सभी इंसानों का बराबर का अधिकार है अपनी
मांग रखने का या अपने विचार रखने का। आप उसको तोड़ मरोड़ के जो ये खेल खेलना चाह रही है एनएमसी, भाई आपने खुद अपनी रेगुलेशंस में क्लैरिफाई कर दिया कि अपील आप एक्सेप्ट करोगे, फिर भी आप रिजेक्ट कर रहे हो। ये तो वही रवैया हो गया कि हम किसी को नहीं मानते, जाओ जो करना है कर लो। और मेरा कहना ये है कि हमारे को ये केसेस फाइल नहीं करने हैं। कोई नहीं चाहता कि डॉक्टरों के खिलाफ केस फाइल करे। हम आज भी उनको भगवान की तरह देखते हैं सफेद कोट में जब खड़े हैं। आज तक किसी इंसान ने डॉक्टर से जाके क्लिनिक में ये नहीं पूछा कि आप दवाई लिखने से पहले अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, क्योंकि हमारे लिए आज भी वो भगवान है, वो जान बचा रहे हैं। बट जो गलत कर रहे हैं उनको पकड़ना भी जरूरी है। ये रवैये की बदलने की और बदलाव लाने की आवश्यकता है इस समय। और ये चीज बोर्ड को और एनएमसी को दोनों को समझना पड़ेगा, और उसी हिसाब से एक मापदंड सभी इंसानों को नापने का बनाना पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो पेशेंट हो।